Chalo, I think we need to start today. Good evening, everyone. And I hope you all are safe again, very fine at your homes or offices, wherever you go. You are at the best of your health, and every loved one of yours, relatives, and known people also are safe at their homes and at the best of their health. Wonderful. तो आज का सेशन है ना, तो थोड़ा सा मस्ती करते हैं अभी एक 5 मिनट. एक बार रेज योर हैंड एंड टेल मी यू आर एबल टू हियर मी वेरी क्लियरली. Wow, that's a good feeling. Huh. Okay, so I'll start off with a story again today, and a beautiful one. And this is what we are trying to do with you today. Uh, यूएस में एक बहुत अमीर आदमी था, वेरी रिच मैन. मीन्स ही हैड 50 companies on his name. He was the CEO. He was on the board of directors of more than 50 companies in America. उसके पास 500 एकर्स का लैंड था. सुपर रिच. एंड बहुत बड़ा घर था. घर क्या बोले उसको, तो हम विल से इट वाज अ पैलेस दैट ही ओन्ड इन अमेरिका. और उसके उस घर में एक ओलंपिक्स स्टेडियम जो होता है ना, ओलंपिक जहाँ खेलते हैं, उतने बड़े साइज का स्विमिंग पूल था. सच अ रिच मैन, फिल्दी रिच. मतलब ऐसा लोगों को देखकर लगता है ना, बाप रे क्या अमीर आदमी है. एंड बट उसकी ना एक टेंशन थी सिर्फ. ही हैड वन प्रॉब्लम, वेरी बिग चैलेंज. एंड द चैलेंज वाज उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी. एंड ही हैड ओनली वन डॉटर. एंड शी वाज नॉट एबल टू गेट मैरिड. वो बहुत कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं से हो जाए. Now, honestly, there was no problem with the girl. The girl was very intelligent. The girl was wise. The girl headed five of his 50 companies, and she was brilliant. She was good looking as well. No problem at all. But still, she was not getting married. Now he was frustrated every day. Now what he did, एक दिन उसने decide किया कि आज कुछ अलग करते हैं. Let's do some prospecting today. So he did a prospecting. उसने न्यूज़पेपर में ad दिया, और उस ad में उसने लिखा कि all the young bachelors of America are invited to my place and there is a competition. ठीक है. And the competition, जो जीतेगा, जो बैचलर, उसको 3 इनाम मिलेंगे. तो 3 में से कोई वो एक चूज कर सकता है. राइट. The first prize is I will give all the 50 companies of mine into his name. मतलब मैं अपनी डायरेक्टरशिप ओनरशिप छोड़ दूंगा, एंड दैट बॉय विल बी माय सक्सेसर. द सेकंड प्राइज, अगर उसको ये नहीं चाहिए तो आई विल गिव ऑल ऑफ माय लैंड. जितना लैंड मेरे पास है, आई विल गिव एवरीथिंग. और अगर उसको ये भी नहीं चाहिए तो आई विल गेट माय डॉटर मैरिड टू हिम, सो आई विल मेक हिम माय सन इन लॉ. तो as I suppose all the young bachelors thought, भाई तीसरा ही इनाम ले लेंगे अगर हम जीतेंगे तो, क्योंकि अगर तीसरा आ गया, अकेली लड़की है, तो वैसे भी सब मेरा ही है बात. तो people were very smart. They were all energetic, enthusiastic, and they reached his house. All the media was there, सब press वाले, newspaper agencies, news channels, सब लोग थे, celebrities, because he was a very famous and a rich man, and they were very keen to see this event जो हो रहा था वहां पर. And now thousands of bachelors came in, very neatly dressed, और मतलब सब तैयार होकर आए, wanted to make a first impression on the father. And they out of those 1000, let's say 1000 came, out of those 1990 they did not even go to the father. Now that is what the problem is. वो कहते इतना बड़ा घर, बाप रे मेरे नसीब में कहाँ है. Entire of my generation has never seen this amount of money, and I am not capable of even trying here. So they quit, और उन्होंने वहाँ पे डिनर, डीजे, फुकट का सब अल्कोहल, एवरीथिंग वाज देयर, द पार्टी वाज गोइंग ऑन. दे सेड चलो यार वहां जाते हैं, मस्ती करते हैं. But 10 guys, they actually went to the father and said, sir, tell me, what is the competition? Now the father said, can you look at the swimming pool here? They said, yes, it's so huge, sir. Yes. The competition is, जो बंदा इस स्विमिंग पूल को इस एंड से उस एंड तक पार कर जाएगा, वो जीत जाएगा. ही इज द विनर. Now everybody was so happy. अरे इतना सिंपल है. And out of those, then 5 were national swimmers. They said, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बढ़िया मजा आ गया. Now the father says, no, come back. It is not that easy. Success comes with a price. So this swimming pool has got 20 crocodiles. 20 मगरमच्छ है इसके अंदर, जो कि पिछले 15 दिन से भूखे हैं. Now looking and hearing to that thing, and वो मगरमच्छ बाहर आके बार बार ना अपना दांत दिखा रहे, because they're hungry, they really want meat now. So out of those 10, all the people came back. कहते भाई मर गया तो शादी फोटो से करेगा क्या, छोड़ खत्म कर. And they looked at those 990 people. They said, see, they are so happy.
हम फालतू यहाँ पर आ गए। आप दोपहर हो गई, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, शाम का 5:30 हो गया। एवरीबडी इज वेटिंग कि कोई तो डेयरिंग करे हु कैन क्रॉस दिस स्विमिंग पूल। तो अब ये फादर जो है परेशान हो गया था, इतना पैसा खर्च कर दिया, सब किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। न्यूज़पेपर वालों को बोलता है, सब बोलता है द कंपटीशन इज ओवर, एंड द मोमेंट ही सेज, एक आवाज आती है एंड वन पर्सन क्रॉसेस। So let's say सुभाष शर्मा जी क्रॉस द स्विमिंग पूल फॉर एग्जाम्पल, राइट। और जैसे ही वो क्रॉस किया, पूरा न्यूज़पेपर, कैमरा सब उनके पास, सुभाष जी, अरे वाह क्या बात है, आपने क्या काम कर दिया। फादर वाज एक्साइटेड, ही वेंट टू देम, ही वेंट टू सुभाष जी एंड सेड, सर कांग्रेचुलेशंस, क्या चाहिए आपको, क्या आपको मेरी 50 कंपनियां चाहिए? कहता है नहीं 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 नहीं, वो हटाओ बाजू में। कहते हैं अच्छा अच्छा, फिर आपको मेरा 500 एकड़ जो जमीन है वो चाहिए? कहते हैं नहीं नहीं, इसको छोड़ो। कहता है वेरी स्मार्ट, दैट मीन्स यू वांट टू मैरी माय डॉटर। कहता है नहीं सर, ये सब बाजू में रखो, पहले मुझे बताओ मेरे को धक्का कौन मारा। Now there are two learnings out of this. Number one, to achieve success, my dear friends, we need a push, isn't it? Raise your hand. We need a push. Those 990 people, they never believed that this much amount of success can be achieved by simply putting yourself into out of your comfort zone. They never imagined, they never had those beliefs. Now out of that, जो एक सुभाष जी बेचारे वहां खड़े थे, वो उनको पुश क्यों मिला? क्योंकि वो उसके नजदीक खड़े थे। So you need to be very near to the opportunities in your life. If you are near, शायद कोई ना कोई धक्का जरूर मारेगा। और अगर नहीं आया कोई, आपके नसीब में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको धक्का मारता है, हमेशा पुल ही करता है आपको, then you need to have that belief that you should be able to push yourself from inside. And today what Kirti sir has done is this. We all are trying to push you. We're trying to push you out of your comfort zones. We're trying to push you to take care of the challenges that are going to come post this COVID-19 situation that we are having. And you are the selected one from the company, trust me. If you are a selected one from the company, you got to take this program very, very seriously because he believes in you. Is that right? Say yes. Wonderful. Let's go ahead. Sangeeta ma'am, LK Panchal saab, Prasad ji, Yogesh Sharma ji, Smita Patil ma'am, Sunaina, can you put on your videos, please? Okay, thank you very much. Waiting for others. Great, great. Please, please, please put on your videos. Thank you so much. Thank you very much. Okay, let's go ahead. Today's session is going to be about prospecting and telephonic appointment setting, which is very, very important. How do you start a telephonic pitch? How do you handle objections? What kind of words we use, and what are the things that we need to do in order to be successful at appointment setting? Do you understand, guys, that we are now slowly moving towards the face-to-face meeting? कल जो हमने किया, that was all about preparation. That was all about you preparing. Now we need to get prepared for the face-to-face meeting. Am I audible clearly? Okay, okay, good. तो चलो, let's no. कौन बोला no? सुने ना मैम? एक we can wait 2-3 minutes. आ जाएगा आवाज मैम, अगर नहीं आए तो मुझे दोबारा बताइएगा. Okay, let's start with the exercise that I gave you. Can you tell me the questions? किसने prepare किया है? Answers, please. You repeat the question again, sir? Okay. Can you tell me the kind of questions that you have prepared जो कल मैंने exercise दिया था? जी. हाँ. Question में sir, can I? Yeah, please go ahead, ma'am. Very happy to see you. Yeah. Yes, sir. First आप जो हम खुद से question करेंगे, that is कि according to our profession, what is the age of the customer?
What is the हम खुद age? प्रिपेयर होते हैं तो एंड Okay. या एज ऑफ द कस्टमर, देन द जेंडर ऑफ द कस्टमर, कि वो हाउसवाइफ है या उनको सर्विस में है या बिजनेसमैन है, उनका प्रोफेशन क्या है, कि अगर उनको बिजनेसमैन है तो उनको वो सर्विस इंडस्ट्री, उनको कंपनी के लिए चाहिए या इंडिविजुअल चाहिए लॉकर, देन Okay. वो हमारे किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के रेफरेंस से है या वो डायरेक्ट आए आ रहे हैं हमारे पास, Okay. देन वेयर दे स्टे, लाइक हमारा जो लोकेशन है उससे उनका डिस्टेंस कन्वीनियंट है या नहीं है, Okay. क्योंकि अगर हम कहीं दूर होंगे लोकेटेड तो दैट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ लाइक लोकेशन का भी प्रॉब्लम होता है। देन हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ दैट फैमिली, कि जिससे हम मिल रहे हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं उनको लॉकर लेना है या दे आर डिपेंडिंग ऑन समवन। Okay. फिर उनके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ओकेशन है क्या, लाइक कोई मैरिज है जिसके लिए उनको लॉकर चाहिए, मैरिज पर्पस से भी लेते हैं, न्यूली मैरिड है तो, these are the question we think before calling prospects. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. I'm so happy. Thank you so much. Yes. हाँ, और कौन बात करेगा प्लीज? एंड आई वांट अदर्स नाउ टू स्पीक, जिन्होंने पिछले 3 दिन में बात नहीं किया है. एग्जाम्पल है अतुल कुलकर्णी, साइरस सर, देन वी हैव स्मिता मैम, संगीता मैम, नहीं संगीता मैम तो, संतोष सर. आई नीड आंसर्स फ्रॉम Hello, यू. sir. या Hello. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Hello. हेलो, वी कैन हियर यू, बात कीजिए. Hello. हाँ हाँ बोलो सर. दिनेश जी है ना? दिनेश जी का सीम्स टू बी एन इंटरनेट प्रॉब्लम विथ हिम. ओके. क्या क्वेश्चन है सुभाष जी? क्या क्वेश्चन है? हाँ, संत इसमें एक ऐड करूंगा एक क्वेश्चन और जो मैडम ने बोला. हाँ, हाँ. whether he has a lock and Whether he has a okay. I think we lost him. We lost his voice. हाँ, Cyrus sir, please. Whether he has a locker experience before he has taken any locker or not, or it's the Okay. first time he is taking a locker, that needs to be found out from him. Okay. Okay. Perfect. Perfect. Rishi, what are the questions? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, the first question I'll ask, what the person is doing currently, I mean, working or business, and then do you think he is in need of locker really, or what is his work time, what time he gets free so that I could call him? Where does he live? Is he active on social media? Should search his profile, which car he has right now, other necessary details about his father, family, friends, and business, and in which bank he has his account. Yeah, thank you. Good. One more person, and then we'll go ahead. संतोष जी बात कीजिए सर. कल भी आपने बात नहीं किया. सर नाराज ना करिए मेरे को प्लीज. बताइए सर, एक क्वेश्चन बताइए. one thing which you will ask yourself before you pitch. Language is not the problem. We can speak in any language. Of course, I should understand, but then ठीक है. Hindi, Marathi, English. May I, sir? सुने ना? Okay. Yeah, go ahead. This is Dilshad here, sir. अच्छा, Dilshad. Okay. Yeah. Hello, everyone. Hello. So, adding to all the points, I may ask, like, does he feel safe to put his belongings in a private bank? I didn't get this question. Like, is he okay to put savings in a private bank? Because most of them, like, are comfortable with government banks. So, is he okay to? I may ask Okay. that question as well. Yeah. It will give you good information about the thought process of that customer. Exactly. Definitely. Wonderful. So I believe everybody has worked a lot of questions. Still कोई और पूछना मतलब बताना चाहेगा? कोई और? हाँ सर. योगेश. हाँ. हाँ सर.
हमें कस्टमर के बारे में लाइफस्टाइल और वो इंटरेस्टेड है तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके बारे में उससे ज़्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी पहले। ओके, ठीक है, ठीक लाइफस्टाइल है। और जो नेशनलाइज बैंक में है उसके लॉकर, उसको इस पे कन्विंस करना पड़ेगा कि इधर हमारे यहाँ फैसिलिटी उससे ज़्यादा है आपको, और आप मोर कंफर्टेबल रहेंगे ये लॉकर लेंगे तो आप। ओके, ओके, ठीक है, फेयर इनफ। तो आप और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे टुडे व्हेन विल गो अहेड, ठीक है। सो यस्टरडे वी सॉ अबाउट सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग इज स्निफिंग अराउंड, जैसे हमने लायन का एग्जांपल लिया था। हाउ डू यू कैलकुलेट मेंटली एंड फिजिकली, फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड mental calculation, right? And this is how you suspect in terms of you sniff around. You have an eagle eye which is watching and observing every simple thing, and you have your two open ears which are very active, and you listen to the things very clearly, which will help you to like decide that he can be a potential customer. He can be. Suspecting is about can be. You are not sure yet. Now, what is the next step? We call it as prospecting, right? Now, what is prospecting? It is more or less similar to suspecting with some tweaks into the process. Okay? So I will share the screen now. I again request everyone to mute yourself here, please. Okay. So raise your hands if you are able to see the screen. You're able to see the screens? Okay, okay, fair enough. तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी मैं जो बात करूंगा. Suspecting is you are not still sure about कि ये ही पोटेंशियल कस्टमर है या नहीं. आपने सिर्फ उसका सोसाइटी देखा, आपने उसके नाम से सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल को देखा, आपने उसकी लाइफस्टाइल को समझा, उसकी गाड़ी को देखा एंड थिंग्स लाइक दैट. You are still not sure whether he is our potential prospect or not, right? This is suspecting. Remember the example of कोर्ट में जो होता है. You always remember this. You will every time understand what is the difference between suspecting and prospecting. अब वही देखो, once you have identified the customer with suspecting, prospecting starts, right? Prospecting is about asking a lot of questions. जैसे 4 सस्पेक्ट खूनी में से एक पता चल गया कि पक्का हर लिंक इससे जुड़ रही है. Now you start asking lot of questions to that suspect, and the moment you start asking questions, that is where your prospecting stage begins. और इसमें हर एक क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए? It is about finding the man, M-A-N, man. Man is does he have money, MONEY, money. क्या उसके पास पैसा है जो वो रखे आपके पास? क्या उसके मतलब पैसा है तो वैल्यूबल्स है तो he can use the locker. Man, money, does he have the money, right? Number 1. Number 2, does he have the authority to pay that money? And someone rightly said कि क्या वो decision maker है? This is what we call as authority, right? Of course, you have seen his BMW, you have seen his big society, हीरानंदानी में वो रहता है, मगर उसका घर में कोई नहीं सुनता. He has to ask his father, or he has to ask his elder brother and things like that. So does he have the authority? और इसका जवाब बढ़िया बढ़िया सवाल से आएगा जो आप अपने रेफरल को पूछेंगे जिसने उसका नाम आपको दिया है कि भाई मेरे को एक बात बता, ये मिस्टर शाह जो है इसके पास पैसा दिख तो रहा है, क्या ये सारा लोन का पैसा है या ये बिजनेस से कमाता है? ये कहाँ का पैसा है? मतलब फ्रॉम वेयर द मनी इज कमिंग. ओके फाइन, इफ ही हैज द मनी, डज ही हैव द अथॉरिटी टू पे द मनी? मतलब इज ही अ डिसीजन मेकर? भाई तू तो इनको जानता है, तो क्या वो डिसीजन मेकर है? एंड द लास्ट थिंग इज, डज ही हैव द नीड ऑफ द लॉकर? कि उसके घर में ही बहुत बड़ा उसने बनवाया हुआ है? हमें नहीं पता. We don't know that. So all the questions that we are going to ask to our prospect is
all about finding the man, money, authority and need. देखो उसके पास पैसा है, उसको जरूरत भी है, आपको भगवान की कृपा से अपॉइंटमेंट मिल भी गया, आप पवई से निकले, आप गए कल्याण डोंबिवली जहां वो रहता है, आपने ट्रेन से धक्का खा के गए, आप 2 घंटा उसके सामने पूरी रामायण बता दी कंपनी की, हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम का डिमका, टोल्ड एवरीथिंग. फाइनली वो आपको क्या जवाब देता है, ठीक है, आई विल आस्क माय फादर एंड गेट बैक टू यू. डू यू फॉलो दिस? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज यू नेवर आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट अथॉरिटी. अगर आपके रेफरल ने बोला तो भाई तू जा रहा है ना, तू जा, मगर ना एक बार उसको फोन कर और बोल कि आपके फादर भी मीटिंग में रहेंगे क्या, ताकि दोनों मिलके डिसाइड कर ले वहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन यू आर वेस्टेड द टाइम. एंड देन व्हेन बॉस आस्क्स यू कि आज कितना अपॉइंटमेंट हुआ, कितना कॉल हुआ, एंड यू से आई हैव वर्कड हार्ड सर टुडे, आई एम टेलिंग यू, I started from Powai, then I didn't had my lunch, फिर मैं धक्का खा के लोकल में गई, फिर मैं कल्याण उतरी, वहां रिक्शा नहीं मिला, उसका घर ढूंढा, बैठा 2 घंटा उधर, पूरा प्रेजेंटेशन दिया सर, क्या प्रेजेंटेशन दिया सर मैंने, मजा आ गया. बट फाइनली फिर द बॉस आस्क्ड वेयर इज द पेमेंट, वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गोइंग टू हैव a locker with us, and then you say no sir, actually he is going to ask his father and then he will get back to us. Now trust Mr. me. Nachiket, I would like to interrupt. Sorry. Yeah. Yes, Really sir. sorry. Just one doubt. Now, this is per se we are talking about getting an appointment over a telephonic conversation, right? Okay, who is asking the question? Del sir. No. This is about, yes, this is जो टेलीफोनिक कॉल आप करेंगे ना दिलजार, उससे Yeah. पहले की ये तैयारी है. Okay. But then how are we supposed to make out whether that's a decision maker or not? Okay, fine. Very good question. The question is, if he's a reference from somebody, then you definitely can ask this question. Okay. Rest, I will tell you in the telephonic appointment setting content, जो हम आज डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपको नहीं पता तो. Is that okay? Okay. All right. Thank you very much. So, where were we? I forgot. हाँ, तो आप पूरा दिन भर बैठो and but finally the father is the decision maker and then you come back empty handed. It is like a tiger going for a kill without preparation and then coming back and telling कि जंगल के हिरण जो है ना आजकल इज्जत नहीं देते हमको यार, क्या करने का, मार्केट बहुत खराब है, प्रॉब्लम है, अरे कहाँ लोग खाली बुलाते हैं, पैसा थोड़ी देते हैं, अरे नहीं होता, अरे टारगेट इतने बड़े कैसे होंगे, अदर तो रोज का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, मिलता है तो वो खरीदता नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट. So because the problem was we were not prepared. Are you understanding? Raise your hand if you follow, yes or no. Perfect. So that is what we call as asking questions. And a great question asked by Delzard. So अगर आपका रेफरेंस है सर, तो रेफरेंस को डायरेक्टली आप पूछ सकते हो. अगर नहीं है तो हम लोग टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट सेटिंग के कंटेंट पे जब आप जाएंगे आज, तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर. Okay, so prospecting. It is about finding. It is about getting the knowledge about the customer. मतलब उसके बारे में जानकारी. That is prospecting. It is getting the knowledge about the customer. And last, very important is ICP. Identify customer profile. कल किसी ने कहा था, कीर्ति सर I think said that, कि हमारे कुछ एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के कस्टमर्स होते हैं, उनके रेफरेंसेस भी वैसे ही होते हैं. And definitely there are different profiles of customers. There are profiles of customers who only buy an Apple iPhone. There are profiles of customers who only buy a Samsung. And there are profiles who are still happy with Oppo, Vivo and all these phones. So there are different customer profiles which are very important. तो आपने इनको identify करना जरूरी है. So prospecting is what we call as, right? Remember, get precise information about your suspect. अच्छा, एक आदत आप सबको डालनी है, and please write it down. Take a notepad and a pen, of course you are having, but then you need to write this down what I am sharing with you now. We need to maintain a diary for all of us to start writing the prospect का नाम.
Are you understanding? We need to start writing on a diary which should be a dedicated sales diary. उसमें कैसे prospecting करना है मैं आपको बताता हूँ. The first column of it is serial number, of course. Are you following? Yes. The first column of it is serial number. Number 2 is name of the prospect. Number 3 is his profession. Number 4 is his number 4th column is approximate income, which you have understood by asking a lot of questions and gaining knowledge. Then the next column is ICP, customer profile, identifying customer profile. And the last is lead type, L-E-A-D, lead, T-Y-P-E, type, lead type. Now what is a lead? Lead is a prospect. तो उस टाइप को क्या 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज हॉट. हॉट मींस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्लोज, क्योंकि कीर्ति सर का दोस्त है, उन्होंने आपको रेफरेंस दिया है, उन्होंने बात ऑलरेडी कर चुका है, उसको जरूरत भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास अथॉरिटी भी है. सो ही इज अ HOT, हॉट लीड. नेक्स्ट इज वार्म. वार्म मींस हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द वे आई डील विथ हिम. And the third is cold. Cold means बहुत कोशिश हो गया है मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So that is a cold lead. You need to make a list of this. और आखिरी कॉलम में आप लिख सकते हैं रेफरेंस, तो किससे आया है and things like that. You now let me tell you one very profound statement. 100% of top salespeople in the world, 100% of top salespeople in the world, they maintain the prospect list. Because sales is a number game. Another profound statement. Start writing. Sales is a number game. Number game means the more people you approach, the more people you will get appointment with. The more appointment that you get, the more is the probability of you getting a sale. Example, एक निरमा साबुन बेचने वाला सेल्समैन, वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग यू. एक निरमा साबुन बेचने वाला सेल्समैन जिस साबुन की कीमत है 10 रुपया, 10 रुपीज, अब वो 10 डोर्स को नॉक करता है, 10वें डोर पे वो साबुन खरीदा जाता है. तो he has earned 10 rupees, but he had to knock 10 doors. That means for knocking only one door, he is getting 1 rupees. Do you follow? Raise your hands. मतलब हर एक डोर को नॉक करने का 1 रुपया है. अगर 9वें डोर पे वो रुक जाता तो वो साबुन नहीं बिकता. So sales is a number game and it is a rejection business. So my dear friends, you need to maintain that list. You need to maintain that list. You need to have your prospect list full. उसको कहते हैं sales pipeline. पाइपलाइन जो है ना, पाइपलाइन चोक्ड होना चाहिए, फुल. इसने नहीं लिया लॉकर तो कोई बात नहीं, बोलेगा. वो नहीं लिया तो बोलेगा, वो नहीं लिया तो बोलेगा. But my prospect list is always full, my dear friends. So this is what is very very important in prospecting. और इसके लिए बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, कहीं पे भी आप कहाँ भी जा रहे हैं, कहीं पर भी बैठे, किसी के भी साथ बात कर रहे हैं, every person is your potential customer. You can at least take the name, number, and you can at least ask the profession and a contact number. That is more than sufficient. Identify the circumstances of your suspect. मतलब जैसे कि जज द इंडस्ट्री एंड सिचुएशन पोस्ट कोविड-19. अभी कोविड-19 के बाद कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जहां मंदी है अभी भी? तो दे आर नॉट योर हॉट लीड्स, दे आर वार्म और कोल्ड लीड्स. So you need to understand and mentally prepare for yourself. So prospecting is very very important. Now I'll come back to the screen. Any questions or what have you understood? Please share. ये बहुत important है. यार प्लीज बात करो सब लोग यार, ऐसे मत करो. Please tell me. विपुल जी आप बात नहीं कर रहे कल से, बताइए. म्यूट पे हो आप? कल भी मैं था, आई वाज लिसनिंग. अरे मस्ती कर रहा हूँ, बताइए. हाँ, क्या समझ में आया सर? sales is number game, as you say. It's true,
कि आप जितनी ज्यादा यानी ट्राई करेंगे उतना आपको ज्यादा चांसेस बढ़ते जाता है. मोर यू ट्राई मोर यू विल गेट. We do cold call also. तो Yeah, cold of call course. ऐसे ही होता है, जैसे 100 कॉल कोल्ड कॉल करेंगे उसमें से 10 निकलेंगे who is ready to listen to you first properly. Exactly. इसमें से फिर एक दो निकलेंगे कि हाँ चलो we are interested and we will come to you. फिर एक मीटिंग देगा आपको. Yes. और वो भी टाइम पे कैंसिल हो सकता है सर. Yes. I have है ना? experienced everything. Yeah, absolutely sir. Thank you. Okay, सब्रवाल जी बताइए. म्यूट है आप, म्यूट. One should not lose hope or get disheartened, but continue to check all the prospects which we have. Finally, we may hit the bullseye. Yeah, that's right. Amit Chikalkar ji. I would like to add one thing. Delzad, okay. Yeah. See, basically the whole intention and whole idea of doing cold calls is not converting to sales instantaneously. A cold call, a customer that we are calling, we don't know if he has ever inquired for our business or he is ever going to take, interest in buying a locker with us. But the thing is, in a long run, if he encounters this, he might remember that someone had called me. That can be sort of a marketing thing or just spread of word of mouth kind of a thing during the cold call. Very true. Thank you very much. Amit Chikalkar ji, बताइए sir. What is suspecting? What is prospecting? Yeah. Every time when I'm knocking 9 doors, every time I'm getting to learn something or the other. Right. If I'm approaching other head. Right. Very true. Okay. And that's the reason why when I'm going to the 9th door, I'm fully prepared now what I have left and I should be covering that, which I have not said in the first thing. हाँ, और 9th डोर भी बंद हो गया ना मुंह के ऊपर, तो भी 10th 10वें पे जाना है, तो भी 10वें पे जाना ही है. 10वां भी बंद होगा, 11वें पे जाना है सर. 11वें पे जाना है. अब ये ना जाना तो है, बहुत, ये बोलना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली हाँ, एक डोर पेशेंस रख के ये सब करना पड़ देगा. यस, एक डोर बंद हो गया ना तो ऐसा लगता है कि कहां जाके मैं कूदूं, किस ब्रिज से मैं कूदी मारूं. But then that is what you see, sir. I'll tell you, Amit ji. 90% of the sales people quit in the first 90 days of their profession. कहते हैं यहाँ तो इज्जत ही नहीं है भाई, क्या काम करना है, ये क्या बेचना है हर जगह जा जाके. And they quit because, write this down. This is a profound statement again. Whenever customer rejects you, he is not rejecting you. He is rejecting your product or service. ये 90% सेल्स वाले 90 दिन में क्यों क्विट करते हैं? क्योंकि ये कस्टमर की हर बोली हुई बात को पर्सनली लेते हैं. फोन पे बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, तो अपने को गुस्सा आता है, अरे ऐसे कैसे नॉट इंटरेस्टेड, इसको समझ में नहीं आता है कि इतना इंपॉर्टेंट है ये सब. बट देन दैट इज नॉट द वे यू लूज योर माइंड. यू नीड टू बी कूल. सेल्स में सर पे आइस और जबान पे शुगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And we should be very confident of our product. I'm selling something best and not exactly right. So okay, Preeti is not able to hear me. Okay, Preeti, you log off and come back again. Okay, great. So is that a valuable knowledge? Acha, abhi raise your hand and commit this to me today, that you will start making a prospect list ka diary. Raise your hand. Wonderful. So I'll share the screen. We'll go ahead. Remember slideshow. Okay, done.
चलो 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 चलो, अभी रोल प्ले और अभी मस्ती और अब मजा। मेरे जैसा कस्टमर आपने देखा ही नहीं होगा आज तक, ठीक है? अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीकॉल्स। अभी देखो, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले हमने सस्पेक्ट किया, सस्पेक्ट मींस हमने स्निफिंग किया कि क्या ये हो सकता है, बाय फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड ओनली मेंटल कैलकुलेशन। नेक्स्ट, वंस वी डिसाइडेड कि हाँ ये हो सकता है, नाउ वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, वी स्टार्टेड गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज about the suspect, so that it got qualified into a very potential customer, a hot or a warm lead for us. Now we need to pick up the phone and start dialing, right? How many of you have seen the Wolf of the Wall Street movie? Raise your hands. देखा है आपने किसी ने The Wolf of the Wall Street? एक मिनट, I'm not able to see. हाँ, now I can see everyone. Wolf of the Wall Street, have you seen? If not, the best sales movie ever you can ever watch is this. It is all based on telephonic appointment setting and selling as well. तो हमें selling पे तो नहीं जाना है appointment में यहाँ पर, but we need to set the appointments. It's very powerful. उसमें एक statement है, वो कहता है, do you know these machines? The machines with numbers out there in front of you, they are not going to dial themselves. You need to pick up the receiver and start dialing, because they are not going to dial themselves. And I have always got two choices. One is to die rich, or one is to die poor, and I always chose dying rich is better than dying poor. So is pick up the phone and start dialing till the time we choke into customer's throat our product and service. Now this is the commitment, is what is very very important. अच्छा, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट सेटिंग के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे मन में, सबसे पहले ना हमारे मन में ही रिजेक्शन होता है. हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो? रेज योर हैंड्स. सबसे पहले हमारे मन में ही रिजेक्शन है. कस्टमर से तो अभी हमने बात भी नहीं किया है, वी हैव नॉट स्टार्टेड टॉकिंग येट, बट हमें ही डर है. वी ओनली फील, कोल्ड कॉल करते समय हमें ही एक अंदर से वो डर होता है. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. वी नीड टू फेस दिस फियर एंड इरेडिकेट दिस, बिकॉज अगर वो फियर है तो फोन उठेगा ही नहीं, राइट? सो प्रिपरेशन फॉर टेलीकॉल्स इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. ये फर्स्ट स्टेप है सेल्स को क्लोज करने की प्रोसेस का. इसको अगर बढ़िया कर दिया तो 80% काम आपका हो चुका है, राइट? तो सबसे पहले तैयारी करना है. नंबर 1, फर्स्ट टेलीफोन कॉल टू एनी प्रोस्पेक्ट इज द लास्ट चांस ऑफ गेटिंग एन अपॉइंटमेंट. इसका क्या मतलब है? द फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी अमेजिंग. योर फर्स्ट कॉल हैज टू बी एब्सोल्युटली एंथ्रोलिंग. मतलब मजा आ जाए, उसको लगे कि इस रिसीवर के उस बाजू में कौन आदमी है यार, I really want to meet him or her. So first telephone call to any prospect is the last chance of getting an appointment. Now the preparation for the telecalls is divided into 2-3 parts. Number 1 is physical preparation, which we are going to do, and next is mental and emotional. Yes, सबसे important है. Mental and emotional preparation. Have daily goals of the number of appointments we need to make. तो दिलजाद बोलता है कि आज मेरे को 10 अपॉइंटमेंट तो मैं कंफर्म करूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं चेयर से जब तक मैं 10 अपॉइंटमेंट आज का कंफर्म नहीं करता. सो हैव डेली गोल्स एंड दैट पुशेस यू ब्रिलियंटली. एंड रिमेंबर, कस्टमर्स विल ऑलवेज बी रिजेक्टिंग. प्रिपेयर योरसेल्फ बॉस, प्रिपेयर योरसेल्फ. नाउ एक कंपनी था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां मुझे ट्रेनिंग मिला था. एंड वहां का टेलीफोनिक सेल्स था सिर्फ, मतलब टेलीफोन पे ही बेचना है प्रोडक्ट को. 6 महीने से, पूरे 6 महीने से 25 लोगों की टीम मिल के महीने का सिर्फ 10 सेल कर रही थी. 6 महीने से 25 लोगों का टीम महीने का सिर्फ 10 सेल कर रहा था. नाउ आई वॉज बीइंग कॉल्ड. आई सेड कि ठीक है, मुझे मिलाइए सबसे, एंड आई वांट टू विजिट मॉर्निंग 10 AM. 10 बजे सुबह ऑफिस चालू होता था, 6 बजे तक. मैंने कहा मैं एक दिन आपके ऑफिस में बिताना चाहता हूँ. तो मॉर्निंग आई वेंट एट 10 AM एंड आई सॉ एवरीबॉडी ओनली लुकिंग एट द लिस्ट, ओनली गूगलिंग, इधर उधर से नंबर लाना, इधर उधर बातें करना, कॉफी पीना, टाइम पास करना.
मैंने कहा क्या हो गया? फिर मैंने 2-4 लोगों से पूछा, कहते सर वो ना कस्टमर जब फोन रखता है ना ऐसा मुंह पे बहुत बुरा लगता है. So then I said fine, okay. Then I went to the owner of the company and I said, sir, from tomorrow let's start a competition. सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पहले 1 घंटे में जितने लोग ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन लाते हैं उनको हम गिफ्ट देंगे शाम को. Have you understood the reverse engineering? Now everybody started dialing at 10 a.m. और सब लोग लेके हमें 10 लोगों ने रिजेक्ट किया, हमें 15 ने किया, हमें 20 ने किया. And slowly the sales started increasing, not because of rejection, but because people started dialing the phone. And sales is a number game. How many of you follow this? Say yes louder. Yes. 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 So rejection से डरना नहीं है. Yes. Rejection से डरना नहीं है. Rejection से डरना नहीं है. वो तो आने ही वाला है. वो तो Sir, आने ही I वाला would है. like to contribute some experience of mine. Please sir. In my 30 years of sales career, Hmm. one thing I want to share with all the people Hmm. who has opted for sales. Hmm. First thing, you have to be very thick-skinned in this career. Hmm. Hmm. Correct. Correct. You should not be sentimental. Correct. वंडरफुल. थिक स्किन. वो क्या कहते हैं, किसका चमड़ी? हिंदी में कुछ डायलॉग है ना, किसका? गेंडे का चमड़ी. गेंडे का चमड़ी होना चाहिए यार. मतलब डरना नहीं है, रिजेक्शन तो आना ही है. एंड यू सी माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अबाउट योर ओन पर्सनालिटी. अपने लाइफ में भी रिजेक्शंस को कैसे हैंडल किया है ना, टेल्स एवरीथिंग अबाउट यू, राइट? So we need to be able to handle those rejections, because remember, customers will always be rejecting. So prepare yourself. तो इस 10 रिजेक्शन में एक आधे ने हाँ बोल दिया ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ जाता है, कहते हैं अब तो हम नरेंद्र मोदी को भी लॉकर बेच के आएंगे. So it is very very important. So the first thing is you need to start dialing. Prepare yourself. फिजिकल प्रिपरेशन, इसको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लीन योर टेबल. जहां पर आप बैठ के कॉल करते हैं, क्लीन योर टेबल. उधर कचरा पट्टी, मेस, फाइल इधर उधर पड़ी हुई, डॉक्यूमेंट्स, ये सब, चाय का कप जो कल से पड़ा है, वो सब नहीं होना चाहिए. शुड बी वेरी क्लीन. एंड हैव ओनली टेलीफोन, अपॉइंटमेंट डायरी जो मैंने आपको बोला अभी बनाने को, एंड द प्रोस्पेक्ट लिस्ट विच इज देयर इनसाइड द डायरी. Number 2, have a list ready of your successful and happy customers. इसका जवाब कौन देगा? जो मैं बोल रहा हूं कि सक्सेसफुल और हैप्पी कस्टमर्स का लिस्ट हमारे पास होना चाहिए. Who will tell me the answer? Yeah, because these are the ones who will in future give us more business. Either they would opt themselves or they would spread a word of mouth for the relatives or friends. नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं समझा. कि आपके पास अपॉइंटमेंट डायरी, टेलीफोन और प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो ये है अलग से, मगर आपके जो ऑलरेडी कस्टमर है उनका लिस्ट आपके सामने होना चाहिए. ये क्यों? Because we need to be in a constant touch. Boost us. They are going to boost us. Okay, fine, good answer. Sir, आपका आंसर भी सही है, not wrong at all, but still I need a precise one. Rupali. They can give us further customers. No. They can give us further customers. They can refer to somebody. No. Rupali wants to speak. हाँ. जी, जब भी हम कॉल करेंगे उस टाइम पे अगर हमारे पुराने कस्टमर्स रहेंगे, जो भी सक्सेसफुल स्टोरीज रहेंगे हमारे सामने, ताकि हम उन लोगों को बता सके. वेरी गुड, अमेजिंग. मतलब वो कहता है कि कितने लोगों को फायदा हुआ है तुम्हारे इस वो लॉकर का, मुझे बताओ. So then you start telling the names. This helps you in handling objection during a telephonic call. So I'll just like to give my view here. Kirti Now, sir, okay. We are in the business of confidentiality. Yes. Okay. Right. So we can't actually tell names of customers, but yes, what we can do and what we must practice is, yes, we have, say we are calling up a particular person of a particular category. We can say, yes, so there's someone from your industry
who also has a locker with us, and he's very satisfied because of this reason. Maybe this reason will also, and also at the same time, you can always tell him that yes, see, we are confidential for our customers, so we can't give you their name, but we have customers like you who are happy with this service in our company. That we're offering. Pardon me, I'm so sorry. Absolutely right. So you can at least take the name of the industry, sir. Absolutely. Okay, perfect. So looking at our customer, let's say if he's from an advertising industry, you can give a reference of a similar industry, right? Absolutely. You can give it. It can be basically a name hidden testimonial kind. Anonymous. Yeah, anonymous. Yes. Perfect. Point noted. Thank you so much, sir. So and have a list ready of your successful and happy customers. Write all the answers to all I would like to possible add objects. one thing. I'd like to add one thing. Quite funny in this sense. As you said, most of our customers are residential customers. Now, in this scenario, if a customer that we are talking to, say, for example, I stay at Grand Prairie, and in that reference, if I go and tell him that we have many customers in Grand Prairie, they will start naming who is it. So that also doesn't work actually. Absolutely. So, sir, that is what it is. You need to be prepared with the script for every possible situation, and that is what we are going to do in the next slide. So, write answers to all the possible objections. देखो, अगर आप सेल्स कॉल करते हैं तो आपको पता है कितने टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं और कितनी बार आते हैं. So you can start writing the answers to all the possible objections and keep it in front of you. Don't be so confident कि मैं तो जवाब दे दूंगा. वो क्या होता है फोन पे कभी-कभी रेगुलर जो चल रहा है ना फोन, उस समय हमारा दिमाग भी कभी-कभी काम नहीं करता. And we might lose out a very big opportunity. Write answers and keep it in front of you. And last is improvise and prepare. Improvisation is what? Oh, my internet connection is gone. Just hold on. The electricity is not there. Okay, I'm back. हाँ, अभी आवाज आ रही है? Yes. Okay, thank you. Now light चला गया, so I had to connect the hotspot. I'm so sorry. Okay, so that is what the preparation is all about. That is what the preparation before a telephonic call is all about. Now let's go into कि call कैसे करते हैं. What is the script that we need to have? Please answer me if you are able to see the screen. Able to see the screens? Yes. Okay, thank you very much. So physical preparation ये होता है. Next is mental and emotional preparation. Don't let the previous call decide your next. मतलब पिछले कॉल में अगर आपको रिजेक्शन मिला है, so let's put it out of this mind and understand कि this is a new call, right? This is one. अगर कोई भी मुझे नहीं सुन पाए बीच में तो please interrupt कर देना. Next, now this is emotional preparation, no? Think you are a wonderful person who are talking to solve customers problems. भाई मैं ही हूँ जो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, and I am a wonderful person. This is emotional preparation. And have a smile on your face. अब आप बोलोगे नचिकेत हम तो फोन पे बात करेंगे तो स्माइल कैसे नजर आएगा? Well, वो तो समझ में आता है कि जब इंसान स्माइल नहीं कर रहा है और फोन पे बात कर रहा है, we could judge the voice and the pitch, the way he speaks. So very very important. So script होना चाहिए. There has to be a script before you make a call. The first step of the script, इसको लिख लीजिएगा. Please, it's a request. You start writing this down and everybody will prepare their own script based on the kind of customers they deal with, right? The first step of a telephonic appointment setting script is introduce yourself and the company. Very simple. Number one. Number two, check for the right person. क्या मैं उसी से बात कर रहा हूं? क्या मैं इनसे बात कर रहा हूं? This should be the question. Next, just don't start speaking. Ask permission to speak. Is this the right time, sir, to speak with you?
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दिस बेनिफिट स्टेटमेंट. जैसे फेस टू फेस में आपको अटेंशन आना जरूरी है कस्टमर का, वैसे ही फोन पे उसने आपको क्यों सुनना है, उसके लिए आपको देना पड़ता है एक बेनिफिट स्टेटमेंट. नाउ दिस बेनिफिट स्टेटमेंट इज जो एलिवेटर पिच में हमने बनाया था. What do you do and what makes us unique? And benefit is WIIFM, what is in it for me? मैं आपसे क्यों बात करूं, ये इस स्टेटमेंट में होना चाहिए. क्योंकि वो पूछेगा what is this regarding? Sir, this is regarding the security of your valuables. This is regarding helping you to have a peace of mind. So he then asks, matlab, sir means this is what it is. Next is ask for appointment. Understand, टेलीफोन पे कभी भी बेचना नहीं. I don't know whether you sell it or not, but that is not a right practice. We should at least make the customer come into our office, or we should have a first initial face-to-face meeting at his office. So the only objective of having a telephonic appointment is a telephonic unmute. Ha. Okay. So the only what we call as the only purpose of having a call is appointment. That's it. आमने सामने बैठो, उसका चांस दो. That's it. Ask for appointment. अच्छा, अब क्या होता है? There is this objection handling technique जो पूरी दुनिया में किसी भी objection पे काम करती है. And that is what we call as triple F formula for objection handling. Triple F is feel, felt and found. Feel, felt, found. Technique of objection handling. Feel. अगर कस्टमर कहता है मुझे अभी टाइम नहीं है, तो you feel what he is feeling now. Acknowledge him. Sir, I understand you don't have time. Felt. मतलब many of my customers also, sir, in my first call felt and said कि मेरे पास टाइम नहीं है. But sir, give me one chance to meet you. And give me one chance to meet you, sir. And definitely you will be the happiest one. एक बार मिलने का मौका दीजिए. Just don't give him any kind of a chance to put in more and more objections. Confirm the appointment. Appointment देते समय always use an alternative clause. वो लिख लो, alternative clause. Means अपना खुद टाइम नहीं डिसाइड करना, उसको दो टाइम देना. So sir, then that means tomorrow 4:30 or 6 PM at your office, sir. या फिर आप कल 2 बजे या 2:30 बजे आ सकते हैं. Confirm the appointment. And last, fix by sending in an email or a message. ये होता है स्क्रिप्ट. कोई कहता है I am not interested. Sir, I understand you are not interested. Feel, felt, but many of my customers also, sir, said the same. But today, sir, they have found that meeting me and availing our product and services has been the best decision they have ever made. So, sir, tomorrow 6 PM or 4 PM at your office. Any doubt here? ये स्क्रिप्ट लिखना है हमने और हमारे पास रखना है सामने फोन करने से पहले. हमेशा सामने रखना है जब तक वो हमारे सिस्टम में नहीं आ जाता. Any doubts? Anything which you want to ask? Because for the next 20 minutes we are going to do only role plays now. अब कोई लेक्चर नहीं है. Any doubts? Anything which you want to add? Anything which you want to ask? हेलो. हेलो. हाँ, which लैंग्वेज, मतलब पता कैसे चलेगा कि उनका प्रेफर्ड लैंग्वेज ये है कि वो कस्टमर हिंदी में एक्सपर्ट है या इंग्लिश में या महाराष्ट्र में, तो कैसे मतलब प्रूव कैसे होगा? अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा ना? गुड क्वेश्चन अतुल सर. तो आपने ये मुझे पूरा स्क्रिप्ट इंग्लिश में दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया, बात किया, लेकिन अगर वो इंग्लिश समझता ही नहीं तो क्या मतलब? बराबर है ना. लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर. यही मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ. सर, थैंक यू सर, आपने कह दिया कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट मैं आपको बताऊं सर, मेनी ऑफ अवर कस्टमर्स, बहुत सारे मेरे आज सक्सेसफुल कस्टमर्स ने भी मेरे पहले कॉल पे यही बोला था. पर मगर सर आप एक बार मिलने का मौका दीजिए, एंड डेफिनेटली सर
आप बोलेंगे कि दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। तो हेलो बोलते ही आपको समझ में आता है ना वेदर ही इज अ हिंदी, मराठी और इंग्लिश गाय। मराठी आदमी, मैं आपको बताऊं मराठी आदमी हेलो कैसे बोलता है, हेलो, हेलो, हाँ बोला, ऐसा बोलता है, राइट? इंडिया, हेलो, कौन बोल रहे हैं? So you can understand the way he uses his voice and tone. और नाम से भी पता चलता है, मिश्रा है, कुमार है, देशपांडे है, कुलकर्णी है। Okay. Yeah. Any other question? So मेरा experience ये रहा है कि whenever I speak to the customer, suppose I start with English. Okay. And सामने से अगर मराठी में आ जाता है या फिर हिंदी में आता है, then I revert them in that sense. Then I understand कि नहीं, इसको तो मराठी में pitch करना या फिर उसको हिंदी में ही pitch करना है। अच्छा। That is one way when we can also understand. Okay, good way, good way, good way. Not bad. Not bad at all. Or so language is not the problem. You need to express. See, that is important. We need to express what we are trying to do. And the only purpose of a telephonic call is to get an appointment. Either you go there or invite him at your place. That's it. Any other further question, please? Before we go into a role play. Okay, fair enough. Kirti sir. Yes. Sir, let's be very comfortable here. Right. काम करते हैं, मैं कस्टमर बनने से अच्छा एक बार आप बनेंगे सर, and I will pick any one of them to give you a call and get an appointment. And you need to act and you need to put one or two objections. So I need to be a difficult customer. Is that what Not that difficult, not that difficult, but a little bit. थोड़ा सा, हाँ। कौन करेगा? डेजा जी, डेजा जी। कॉल कीजिएगा सर को, मतलब एक्टिंग करना है आपने अभी। बाकी सब लोग म्यूट पे रहेंगे एंड लिसन टू हिम एंड आई वांट फीडबैक फ्रॉम अदर्स व्हाट हैपेंड हियर। Okay. Hello, am I speaking to? Hello, my name is Dalsar. I'm calling from India Safety Goals. Am I speaking to Mr. Kirti Loya? Yes, that's right. Very good evening, sir. So, as I rightly said, I'm calling from India Safety Goals, sir. It's a private locker company wherein we What is this provide regarding? locker What is this regarding, Dalsar? Sir, it's a private vault, sir. Just like bank lockers, we provide I safe have a deposit meeting. service. I have a meeting right now. I'm in the middle of a meeting. I mean, it's. Can I call you back, or can you call me back later? Sure, sir. Can you tell me what's the right time to talk to you then? Call me on Monday at 12:30. Sure, sir. Will be done, sir. I'll call you on Monday, sir. Have a good time, sir. Thank you so much. Bye. Okay. क्या बोल सकते थे और how could you get attention? Delzad, yes, sir. How would you have done a little bit better call than you did? Actually, sir, to push a customer even more, he might get irritated. So it's like if you're getting a time to talk. The first thing what you should have mentioned is it a good time to speak to you? So that was missed out. All right. Yes. So when you would have asked me a question like this, I would have said maybe it's not a good time, but can you call me back at a time earlier than maybe 1 week away? Yes. Absolutely. You know, because I feel for you that you will have concern for my time. So I will give you a more immediate time. Okay. And when you mentioned you're calling from India Safety Vaults, that punchline, you know, that benefit line that you want to mention in terms of, you know, we make people sleep more peacefully. For example, that could have been something which would have kind of triggered my brain. So then I was like, how do you do that? Possibly. Very right. Okay. I'll leave it to Nachiket now to say what. Yeah. So benefit statement और permission to speak was missing. Permission to speak से क्या होता था? आपको उनके समय का वैल्यू है, ये उनको सेंसिटाइजेशन होता था, नंबर 1। और बेनिफिट स्टेटमेंट से चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, वो 2 मिनट सुन के तो जरूर जाते आपसे, भले अपॉइंटमेंट नहीं देते, मगर कॉल अगला करने का समय आपको मंडे से बहुत पहले शायद आज ही दे देते, 1 घंटे बाद करो करके।
right? Okay, great. So now I become the customer. Who wants to speak? मराठी में बात करते हैं, चलो. मराठी में कौन comfortable है? Someone needs to nominate themselves, huh? हाँ. करसी साहब करेंगे? म्यूट. हाँ. येस सर, मला मराठी बराबर येत नाही. हिंदी में मराठी शब्द हिंदी में कर सकते हैं जी. हिंदी चलो में कर सकते बहुत हैं. बढ़िया. ठीक है, कीजिए कॉल सर. नमस्ते रुषा जी, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर रुषा जी? हाँ हाँ बोलो, बोल रहा हूँ. रुषा जी, माय नेम इज केरसी इलाविया. कैन आई गेट 1 minute टू स्पीक टू यू सर? क्यों, क्या काम है सर? व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? This is regarding we are into business of safe deposit lockers, and I could give you a better offer. And हमारा ये can I go 5वां further? कॉल है, ये लॉकर का 5वां कॉल है. मुझे 4 बैंक से और सुबह से आ गया है. मतलब आज टारगेट वगैरह है क्या कुछ तुम लोगों को? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी. हाँ. मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारा प्रोडक्ट और हमारा सर्विस बैंक से बहुत अलग है जी. अभी मैं शादी में जा रहा हूँ एक, आप बाद में बात करेंगे प्लीज. मैं थोड़ा सा समय लूंगा सर, आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा जी. अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बिजी हूँ, मैं अभी शादी में जा रहा हूँ, अभी बाद में बात करेंगे हम. चलो ठीक है ओके, सर. थैंक यू, तो बाय बाय. कौन सा? कट कर दिया मैंने. हाँ जी. एंड व्हाट हैपेंड हियर? Sir, can I take a try? कौन है? अरे वाह, नाउ दिस इज व्हाट आई वांट, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योरसेल्फ. वेरी गुड. बताइए. हाँ करो, ट्राई Am I करो. speaking to Mr. Nachiket? यस. Good evening, sir. Am I speaking to Mr. Nachiket? गुड इवनिंग. यस. Is it the right time to speak to you, sir? Not the one, but still go on. What is this regarding? Sir, we are into business of securing a locker facility which will make you help you sleep. Secure your valuables, which will help you in peaceful sleep, sir. I sleep well every time. I sleep well. Well, by the way, I'm going out of town tomorrow, so is this not the right time? So okay. So when can I call you back, sir? In that case, Next Diwali, sir. try was important, sir. अरे very good. You see, you did well. You see, देखो आप ना अभी रोल प्ले में हो, आप इससे बहुत बेहतरीन करोगे सर. मैं I have no doubt. I just want you to prepare yourself for such kind of situations. So when I'm going out of town, I said you should have asked, कि sir, when are you going? Where are you going? You should there नहीं, but when are you going? Where से आपका संबंध नहीं है. When are you going? है ना? और when can I call you back? ऐसा नहीं पूछना कभी भी. So if you have asked me कि कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, तो आप एक फिक्स कर सकते थे टाइम. ट्रिपल एफ टेक्निक यूज कीजिए सर. फील फेल्ट फाउंड. हाँ, कल्पना wants to try. Yeah. Now this is good. People are coming in to contribute. Wonderful. Sir, as you said, I'll say in Marathi. मराठीत बोलणार का? ठीक आहे, चला. हाँ. गुड मॉर्निंग सर. मी मिस्टर नचिकेत का? हो बोलतोय. हा सर, 2 मिनिटं बोलू शकते का तुमच्याशी मी? काय काम आहे तुम्हाला मॅडम? ऍक्च्युली तुमचं पीस ऑफ माइंड आणि तुमचं सेफ्टी साठी थोडंसं. ईशा फाउंडेशन मधून फोन केलाय का मॅडम? सद्गुरूच्या? नाही सर. हे सेफ डिपॉझिट लॉकर्स बद्दल आहे. तुम्हाला जेव्हा वेळ असेल तेव्हा तुम्ही मला सांगा, म्हणजे आपण बोलू शकतो सर. मॅडम माझा प्रॉब्लेम असतो आहे, मला वेळच नाही आहे. नाही सर, जास्ती वेळ नाही घेणार तुमचा. फक्त आमच्याकडे लॉकर्स आहेत सर, जे आम्ही रेंटवर देतो सर. त्याच्याबद्दल बँकेत पण लॉकर असतात मॅडम. सर बँक आमच्याकडे प्रायव्हेट आहेत. एक काम करा, 365 डेज. एक काम करा, तुम्ही तुमचं ब्रोशर असेल ना कंपनीचं? हो सर. ते पाठवून द्या मला मेलवर. मी आय विल गेट बॅक टू यू मॅडम. ओके सर. ओके, थँक्यू सर. गुड डे सर. Good day. Thank you. Good day to you as well. Of course, your day is not good now. Once I rejected you. Okay. Now,
अभी देखो ये जो ऑब्जेक्शन है कि सेंड मी योर ब्रोशर, यू कैन टैकल दिस कि सर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेंड यू द ब्रोशर, मैं तो वो तो भेजूंगी ही सर आपको, मगर दैट ब्रोशर विल नॉट गिव यू दैट इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे बैठ के बात करना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपकी नीड के बारे में, और मैं किस बेहतरीन तरीके से आपको सोल्यूशन दे सकती हूँ. सर ये तो फेस टू फेस बैठ कर होगा, तो सर कल 4 बजे या 6:30 बजे सर आपके ऑफिस में. नाउ दिस इज हाउ यू क्लोज दिस. डोंट गिव हिम द चांस, बट वेरी वेल ट्राइड, वंडरफुल, थैंक यू. Nidhi wants to speak. Hello, sir. Can I try? Yeah, please. Good afternoon, sir. I'm calling एक from मिनट India होल्ड करो. हाँ, okay, now go on. Yeah, good evening, sir. Am I talking with Mr. Nachiket? Yes, who is this? Sir, I'm calling from India Safety Vault. My name is Nidhi, sir. I just want to share some information about our company, sir. It's regarding services, sir, of safety and security, sir. For your Security, valuables. safety of what? For your valuables, sir. My valuable thing is my car, ma'am. How can you safely secure that? I'm sure you must be having money to buy cars, sir. Of course. What are you talking about? Yeah, so you can visit our vault, sir, because we provide lockers, sir, safe deposit lockers. So what I should deposit? My car? No, sir, money or jewelry, whatever your valuables you have. Jewelry, my wife doesn't tell me how much she has. I don't even know that. Not an issue, sir. Now it's a big issue for me, ma'am. Okay, well tried. You see, mute कीजिएगा अपने आप को. I want to give you a feedback, everybody. Okay, now understand यार. देखो, आप ना मेरा attention नहीं ले रहे हो. This is one. ठीक है? मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं अपने relatives, friends का भी फोन जब मूड हो तब उठाता हूँ, जब मूड हो तब बात करता हूँ. तो मैं आपसे क्यों बात करूं? और उसके बाद आप मुझसे टाइम मांगेंगे. टाइम, आप पैसा मांग लो, दे दूंगा. टाइम लोग नहीं देते मैम, इवन इफ दे हैव, राइट? सो यू नीड टू गेन माय अटेंशन बाय गिविंग अ पावरफुल बेनिफिट स्टेटमेंट. यू वर्क ऑन दैट, नंबर 1. नंबर 2, ऑब्जेक्शंस जो मैं दे रहा हूं उसका टेक्निक है, एंड विच आई टोल्ड यू, ट्रिपल एफ. फॉलो द स्क्रिप्ट, स्टेप्स ऑफ द स्क्रिप्ट. जैसे स्पैंको का स्टेप्स है, उसको नहीं फॉलो किया तो प्रॉब्लम होती है. वो स्क्रिप्ट का भी स्टेप्स है. फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द कंपनी, देन यू आस्क फॉर मी, एम आई द राइट पर्सन, देन यू आस्क फॉर परमिशन, देन यू गिव अ बेनिफिट स्टेटमेंट, बिकॉज आई एम ओनली द वन हु इज गोइंग टू आस्क यू कि फोन क्यों किया है. दैट इज योर चांस टू हिट द नेल ऑन द हेड. And then don't give me chance. You just fix appointment by giving 2-3 options. Monday, Tuesday, Wednesday, 2:30, 5:30, 6:30. And then I'll give you more objections. And then you tackle that. Don't give up. अगर आप फोन पे गिव अप कर दोगे ना, आप सामने सामने क्या करोगे फिर? फोन का तो एडवांटेज है. फोन का तो एडवांटेज है ना, आपको वो आदमी दिखता भी नहीं है, तो डरने की क्या बात है? हेलो, अंडरस्टूड और नॉट? Yeah, so very well tried. 1 or 2 more. मजा आ रहा है. 1 or 2 more. Want try again? कौन है? अमित. हाँ, प्लीज अमित, प्लीज. Yeah. Hello, sir. This is Amit here. I'm calling from India Safety Vault. I'm Nachiket. Yeah, Amit, yes. Nachiket, sir, is this the right time to talk to you, sir? Yes, please go ahead. So I just wanted to introduce my company. I'm into safe deposit lockers facility here, and I just want to brief you about that. How much time it will take? Hello. How much time it will take? To brief me, how much time it will take? Sir, I would like to meet you in person. Sir, I would like to meet you in person in that case, so that when I can sit down in front of you, I can explain you more.
Okay. Call me on Wednesday. So we have got internal standards. Sorry. Call me on Wednesday. So Wednesday by 12. Hmm? So Wednesday by 12:30, 11. 10 o'clock you call me. 10 o'clock. Sure. So can you please give me an address, sir? I'll visit you at 10 o'clock, sir. Oh, you find it out. I don't know. Okay. Shall I give a prior call before coming, sir? Yes, your wish. You may be busy at that time, sir. No, your wish. 10 o'clock Wednesday Sure, you sir. call me. Okay. Sure, Mute if I'll करो. give a call prior coming, sir. ठीक है. Okay. Thank you. Thank you. अच्छा, अभी एक आपको बात बताऊं मैं ना इसका फोन ही नहीं उठाऊंगा बुधवार को. Yes, sir. Tell me. मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा बुधवार को. मैंने टाल दिया आपको. क्योंकि आपने देखो आप बेनिफिट स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हो यार. प्रीति मैम म्यूट हो आप. मैं कर देता हूं. वेट. हॅलो. प्रीति मॅम विच लँग्वेज? हिंदी, मराठी, इंग्लिश? येस सर, मला मराठीतून बोलायला आवडेल. अरे वा, मला पण आवडेल. बोला. येस. सो मी स्टार्ट करेन ग्रीटिंग पासून. नाही असं करा मी तुम्हाला करा कॉल. सो आय सपोज मी तुम्हाला सकाळी कॉल केलाय. ठीक आहे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर तुम्ही नचिकेत सर आहेत का? हो. आपण कोण? सर मी प्रीती चव्हाण बोलते, इंडिया 50 मधून. प्रीती चव्हाण सर. हा बोला ना, बोला. काय काम होतं आपल्याला? ऍक्च्युली सर 2 मिनिट सर, सॉरी. ऍक्च्युली सर आम्ही एका बिझनेस मध्ये आहोत, ज्याच्यात आम्ही प्रोव्हाइड करतो लोकांना पीस. सो ते रात्री नीट झोपू शकतात आणि ते सकाळी व्यवस्थित त्यांची कामं करू शकतात विदाउट एनी स्ट्रेस. तर तुम्हाला आवडेल का सर माझ्याशी 2 मिनिटं बोलायला? बोला. ओके सर. सो सर आम्ही सेफ डिपॉझिट लॉकर्स प्रोव्हाइड करतो रेंटल बेसिसवर. अच्छा. ते बँकेसारखं? येस सर, पण आमचं इमेज बँकेपासून खूप वेगळं आहे आणि आम्ही खूप जास्त बेनिफिट्स प्रोव्हाइड करतो बँकपेक्षा. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सर आम्ही 365 डेज ओपन असतो. बरं, तुम्हाला काय पाहिजे माझ्याकडून? काय पाहिजे? ऍक्च्युली सर मला अपॉइंटमेंट हवी होती तुमच्याकडून, जर तुम्हाला टाइम असेल तर. सो प्लीज मिळेल का सर? 1-2 दिवसा आधी नंतर किंवा तुम्ही जेव्हा सांगाल तेव्हा. आजचा काय डे आहे मॅडम? ट्यूसडे आहे ना? येस सर. गुरुवारी सकाळी भेटूया आपण. ओके सर, जर तुम्हाला चालत असेल तर आय एम ओके विथ इट सर. नाही, गुरुवारी सकाळी भेटू ना आपण 10 वाजता. ओके सर. ओके सर. सो नाश्ता माझ्याकडून असेल तुम्हाला. अरे बापरे. एक काम करा, जेवण पण घेऊया, आपण जेवू सोबत. ओके सर, सो माझं बुकिंग पण होऊन जाईल तिकडेच. ओके, ठीक है. थैंक यू. ओके सर, गुड डे. थैंक यू. गुड डे. अच्छा, बहुत बढ़िया. देखो, उन्होंने ना स्टेटमेंट वही बोले जो हम कोशिश कर रहे हैं सब लोग, बट द वे शी डिलीवर्ड इट, you know why? Because she had a smile on her face. Now it is not about I am looking at her smile here in the video. It is about I could feel in her voice. She is happy to call me. She is happy to serve me. This is one. Number 2, नाश्ता माझ्याकडून असेल. आता हे this is your way of what we call building a relationship or a rapport, breaking the ice. You can use any other way what you want. This is number 2. थोड़ा सा और ध्यान रखो प्रीति मैम, यू नीड टू कंफर्म द एड्रेस जहां मैं और आप मिलेंगे. तो सर दैट मीन्स थर्सडे मॉर्निंग 10 AM एट योर स्वारगेट ऑफिस सर. इज दैट राइट? यस. ओके. अब मुझे क्या लगेगा, प्रीति तैयारी करके आ रही है मेरे से मिलने. शी नोज अबाउट मी. नाउ इफ शी नोज अबाउट मी देन शी विल डेफिनेटली केयर अबाउट मी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट केयरिंग ऑफ अवर वैल्यूएबल्स which are very valuable to me. So then I will trust you, at least listen to you in your face-to-face meeting. So job well done. Yeah.
You need to be confident. That is very, very important. Kirti sir, any feedback here? So as Preeti mentioned, very well that it's breakfast on her, particularly. There can be just a random question in your conversation, which you can say, "Sir, do you like just a random question? So do you like tea or coffee? Because I'd like to invite you for tea or coffee at my location." That kind of breaks the ice also, because you Okay, know sir. that this gentleman is preferring a cup of tea or coffee, so you know a personal taste of his. Okay. So that kind of, so when I would be talking to Nachi, let's do a call, Nachiket. Let me try चलो and do a चलो call with you. करते हैं. Yes, चलो करते हैं. So I've called you up. Good morning. Is that Mr. Nachiket? Yes. Who is this? Mr. Nachiket, this is Kirti Ruya, and I'm calling from India Safety Wolves. Is it a Okay. good time to speak, sir? Not, but still go on, sir. Sir, thank you so much for your time. Basically, we provide lockers in the private sector on hire, and we can make your the valuables that you would like to put in a locker. It would be very safe in our premises, and I'd like to talk to you regarding that. Okay, go ahead. But this doesn't interest me because I already have lockers in my banks. Totally Okay. understand that, sir. We have a lot more services and products for this particular service in banks, and I'd like to spend some time with you to explain to you the benefits of us over the banks. And if it's possible, then I'd like to invite you over to our branch for a cup of tea or coffee, whatever you prefer, so that we can explain it in better details to you. What we can do, Kirti, here is, can you send me the brochure? I'll go through it and come back to you. Is that okay with you? Definitely, sir. I'll send you the brochure, but the brochure will not give you as much information as I can give you in person. And I'd actually like to invite you to the branch so that you could see all the benefits yourself. Okay, cool. Sounds a good plan. So, sir, is it do you prefer tea or coffee? Because I'd like to either invite you during tea time or coffee time for you to visit our branch. We can have a discussion on our services as well, and plus we can just have a chat. Okay, now these days in this pandemic, this Dalgona coffee has become very famous. Get one for me. Definitely, sir. We're hoping. So, can you come in tomorrow at about 2:30, sir? If that's a good time for you. Tomorrow I won't be free at the time you are suggesting, sir. So, what's Tomorrow a good seems to time? be Is free. it 4 o'clock a better time, or maybe the day after at 11:30 in the morning? We'll fix this day after morning 10 o'clock. We'll get on a call and we'll fix a time. Is that okay? Definitely, sir. I will call you back again at about 10 o'clock tomorrow, and let's go ahead and see if we can meet day after at about 2:30 if you're free. Okay, but just sir, let me be very honest. Don't expect from me that I'm going to buy because I already have lockers. So the Just call or the discussion is only over coffee. So at least if we don't even have a business relationship, at least we'll get to know each other, okay, and we'll have okay, a good discussion on other things, maybe the pandemic and how the solution can be, okay, how we can have solutions for this in the current scenario. okay, okay. You seem to be a very interesting person. Definitely. Fine. So give me a call and we'll fix up a time. Thank you so much. I'll give you a call tomorrow. What Thank would you. be a good time to call you, sir? 10 o'clock morning. Perfect. I'll do that, sir. I look forward to talking to you tomorrow. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. अब देखो यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जेक्शन दिया था. मैं खरीदने नहीं वाला हूँ कुछ भी. देखो, I will not buy anything. I'll not have any business relationship. Don't expect. Now it is all the skill of Kirti sir to convert me, close all my lockers in the banks and route everything to him. Now, that is his skill, which will happen in a face-to-face meeting. But the way he broke the ice. Now look at the voice, the tone, the courtesy. It मतलब वो kindness, वो humble, जो words उन्होंने use किया. It was all visible out here. Yes or no? Raise your hands. And I'll tell you one more thing. I have still made a mistake on this call because my benefit statement was not good enough. Exactly. You see, sir, you started directly with lockers. वहां मैं शट डाउन हो गया. मैंने अरे यार अब फिर कुछ तो सेल्स कॉल है. तो मैंने इतना टाइम लिया. नहीं तो मैं इतना टाइम भी नहीं लेता.
So what happened is, if I have a better benefit statement, then you all will get more attracted to talk to me. So I made a mistake, and I realized that mistake while I was on a call. Yes. So the rest of the call, I was trying to get back his attention. Get back, exactly. So देखो, it is not your problem, sir. It is the problem of everybody here out here. जो हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं ना, हम वैसा ही कर रहे हैं. So वैसे ही रिजल्ट आएंगे जो आ रहे हैं. If we want to get better results, we need to be better at our telephonic script. So that benefit statement is very very important, right? तो वो क्या होता है ना, एक बार प्ले का बटन दब गया ना, तो हमारा मुंह से वो चालू हो जाता है. वॉल्ट है, लॉकर है, ये है, वो है, सेफ्टी है. तो वो एक रैंडम कॉल हो गया ना, मैंने अरे बस करो यार, बस नहीं चाहिए मेरे को. बट द बेनिफिट स्टेटमेंट अट्रैक्ट्स एंड देन. बट सर कीर्ति सर, यू मेड इट अप रियली वेल. उसके बाद मतलब द वे यू गॉट माय अटेंशन, somehow you got connected. ऐसा लगा हम बहुत दिनों से दोस्त हैं. Right. You really want to help me and talk to me. Okay, great. So this is what I'm saying is, obviously on all calls there will be multiple mistakes which will keep happening, but how we can correct our mistake in the time that we have, little time, that is most important. We will all make mistakes. You will make a mistake even in greeting. You might say good morning when it is afternoon. True. You know, that's all going to happen. Yes. But tomorrow the person also realizes you're human. And if you connect with him in some manner, he will let you speak. True. Very true. Nachiket, what I'd want is, if there's a way that you make a call and one of us listens, that might also help. Okay, so now that is my plan for tomorrow, sir. Definitely I'm going to do that. And it is already on the cards. मैं धीरे धीरे क्यों ले रहा हूँ सर, कीर्ति सर? जस्ट बिकॉज द नॉलेज शुड सीप इन. वो रियलाइजेशन आने में टाइम लगता है. एक बार में बहुत दे दिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. So what we do today, we are on the verge of ending today. What we do today, everybody will tomorrow come up with a telephonic script with a powerful benefit statement and a list of objections that your customers put. बस उसका solution क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे. Only write down the objections and what we call as a telephonic script for yourself in any language: Hindi, Marathi, English, Telugu, Bengali, Gujarati, whatever language you prefer. Doesn't. Okay, so what about today? How was the program? Went very well. Yes. So, Nachiket, what we'll do is we'll play the same thing that we'll nominate each other. At first, I'd like to nominate Rishi. Please tell us something about the program. And then, Rishi, after you say something, you can nominate someone else. Sure, sir. Sir, the program was very smooth and got to learn very small but very important things. And now I'll nominate Mr. More. Thank you. म्यूट हो सर आप. या Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Program was good. We are learn more things and understand how to speak to customer and business. Thank you. Nominate someone. To Delzad. Delzad. Yeah, hi. Hi. Well, today's program was actually to understand the practical difficulties that we face during the cold calls and how we can benefit out of it. And now I nominate Mr. Panchal. Good evening, friends. Good evening, sir. It was a very interesting session. And as I told you, every day is a new day. And every person, you have to learn something new. I learned not only from Mr. Nachiket, but all the participants, wherever they gave the contribution, something new came out. And that has added into my mind. And it is very interesting to have new knowledge, sir.
Thank you so much. And now I nominate Mr. Jadhav, Vinayak Jadhav. विनायक जाधव जी, अच्छा बात नहीं. Anyways, what we can do is tomorrow everybody will be prepared with the telephonic script. और जैसे कीर्ति सर ने मुझे suggest किया है, tomorrow I will become the sales guy and you will become the customer. Fair enough. All okay? That was great, sir. Great. Thank you all very much. Sleep well. Have a very good night and see you tomorrow. Thank you so much. Thank you. Everyone. Bye bye. Take care. Thank you. Good night. Bye. Bye. Bye bye. Take care. Take care. Bye. Bye.